सो टुडेज क्वेश्चन इज वर्ड सर्च करना है हमको। एक m by n कैरेक्टर्स की ग्रिड दी हुई है। m by n ग्रिड में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके, कैरेक्टर्स ऑफ बोर्ड एंड अ स्ट्रिंग वर्ड। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है वर्ड, उसको हमको ढूंढना है कि इस ग्रिड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, सो ABCCED, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है ABCCED। ठीक है, अब ये वर्ड इसमें क्यों एग्जिस्ट है? द वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ sequentially adjacent cells where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring. Okay, so what we are going to do is we will loop through the grid. Okay, और सबसे पहले हम I am basically using backtracking here, and to go through all the words I will use depth first search DFS. Okay, तो सबसे पहले मैं पहला जो मेरा वर्ड है उसका पहला एलिमेंट पूरे ग्रिड में ढूंढूंगी। ओके, इसके बाद शुरू होगा मेरा DFS. I will implement the DFS function. It will search for the next word in the grid. Okay, so it will check if A after B is here, मतलब पूरे ग्रिड में ढूंढेगा उसको। ओके, एंड देन ऑल्सो इफ अगर इसके वर्ड नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये एस्मा आ गया, ठीक है, बट इसको बी नहीं मिला है यहाँ पे, तो मैं इसको एज अ विजिटेड भी मार्क करूँगी। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन बैक ट्रैकिंग। ओके, दिस इज ऑन बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। सो क्या होगा कि हमारा जो ए बनेगा वो एक तरह से हमारा इनिशियल एलिमेंट का काम करेगा, एंड देन बी होगा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। देन सपोज वो एफ पे आता है, तो अगर एफ पे यहाँ पर आया तो इसको मैं नॉट एक्सेप्टेड करके सेलेक्ट कर नॉट एक्सेप्टेड करके मार्क करूँगी, एंड इट विल सर्च समवेयर एल्स अगेन, बैक ट्रैक करके। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। सब बैक ट्रैकिंग यूज़ कर रही हूँ। सो मेरा बेस केस क्या बनेगा इसमें? ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। ओके, if what I'm going to do is I will first, obviously I'm going to use मतलब at first I will do depth first search. So wait, so first I'm going to do is depth first search. तो एक फंक्शन बना लेती हूँ मैं depth first search नाम से। ओके, देन इसके अंदर सेम चीज़ आ जाएंगी, मेरा बोर्ड एंड वर्ड्स एंड वर्ड आ गया। ओके, इसके बाद मैं इनिशियलाइज कर रही थी मेरे वेरिएबल, and one more thing will be here, which is word का इंडेक्स। ओके, ए का इंडेक्स, बी का इंडेक्स, उन सब का इंडेक्स। तो क्या होगा, इफ जो मेरा वर्ड का इंडेक्स है वो मेरे वर्ड के साइज के साथ में मैच करेगा, देन इसका मतलब है कि मुझे मेरा वर्ड मिल चुका है। इट विल बी माई बेस केस। सो if my base case will be if my word index equal to word dot size. How word index is, because what will happen, word index will initially be 0. Okay, then it will increase. For example, हम क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं वो 0 to n होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी एरे जो होती है n साइज की होती है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, इनिशियली हमारा जो वर्ड इंडेक्स है वो 0 रहेगा। ओके, तो और हमारा जो वर्ड का साइज़ है जो मुझे दिया हुआ है ABCDED, इट इज़ ऑफ साइज n। तो जब मेरा जो वर्ड इंडेक्स होगा उसका साइज n के इक्वल हो जाएगा, देन इसका मतलब है कि मुझे वर्ड मिल गया। ओके, सो दिस विल बी माई बेस केस। सो इफ वर्ड इंडेक्स is equal to word dot size, okay, then it will return me. So this is my base case, and board string and I j and word index. Okay, this is fine. Okay,
So what we are going to do next is we are going for a depth first search. Okay, so we will check whether our rows or column are outside of the box or not. It is I, okay, it is J. Okay, if suppose if I is 0, then it means it is out of the box, so we need to come back. Okay, if this happens, or I is greater than or equal to both sides, okay, this condition, and then for my columns there will be similar conditions, is 0. Okay, okay, sorry, यहाँ पे J or what will be if J is greater than equal to board size से, okay, okay, and next is और ठीक है, और या फिर हमारा वर्ड मैच नहीं हुआ है, so what will be the word if I am given 0 0, then my word is A. So what if the word don't match, so I will return false. So or board I J, okay, it's not equal to word at word index, then we will simply return false. Okay, now I need to mark the current cell as visited ताकि मैं सुबह दोबारा वापस नहीं जाऊँ. So is equal to board I, okay, so I will use hash hash to mark it is visited. Then if it find something like hash somewhere, so it will not go through it again. So I need to search in all four directions. So boolean found equal to if in board I plus 1, then J, my word index plus 1. Okay, so this way I will found in all four directions. What will be my next direction? Board minus 1, then J, then okay, and I में मैंने travel कर लिया. अब now I will go in J plus 1. Okay, then J minus 1, J plus 1, then J minus 1. Okay, so this is how I will travel in all four directions. Okay, okay, so now I will backtrack and also will restore the original value of the cell equal to temp. Okay, then I will return found here. Okay, okay, so I think that's it. So now if it will exist, I will for this I will loop through my board. So what will happen is for is 0 to board size, then okay, then J 0 to
j less than 4 dot size. Okay, then what I will do is, if the first letter is found, then if A is found, if the first letter is found, then we will start our DFS search here. So if board I j is equal to word at 0 and DFS, so I board word I, then initially my board index will be 0 and it will return me true. And if it is not found, then it will return me false. Okay, now let's check it. If if I is less than 0, clean this, or I is greater than 4 size, or j is less than 0, or j is greater than size, or board at I j is not equal to word index, then return false. After declaration specifiers with brackets are wrong will be here. Okay, no, it's fine. This is how we will do it. Let's try to run it. Wait, यहाँ पे the order is board, word, I, j, then word index. So here also I will follow the similar order. It will be word here, then I plus 1, then j. Okay, this is fine. Similarly here, okay, then यहाँ पे word आएगा. My order was wrong. यहाँ पर word I j minus 1. This is how it will search in my whole grid. Okay, now it's fine. Order गड़बड़ हो गया था यहाँ पे. So this is how we will solve it. Using backtracking, DFS,